mademoiselle, let's start with section A, like comment on peut poser la question. Comment on peut poser. How to raise a question. Claire, now we'll pick something around section A. Claire, now par exemple, A, it will cover up your section A and section A of writing also, because we devons créer l'histoire. C'est clair, ok? Now, par exemple, vous voulez des vitamines. Vous voulez des vitamines. Vous voulez des vitamines pour ne pas tomber malade. Mademoiselle, pour ne pas tomber, tomber malade, cet hiver. Cet hiver. C'est clair. Or no. I'm saying you want vitamins, vous voulez des vitamines for not you falling sick. C'est clair. In this winter. Yes. C'est clair. Vous demandez conseil. ये आप देखो यहाँ पे आप advice पूछ रहे हो. You are gathering the information in terms of advice. This your section A oral. C'est clair. O Okay. pharmacien. O pharmacien. From the pharmacist. C'est clair. Ok. Ok. Vous lui expliquez. Vous lui expliquez. Vous Vous lui expliquez. lui Vous lui expliquez pourquoi. expliquer pourquoi. Pourquoi vous voulez des vitamines A. Vous lui posez des questions. Et vous lui posez des questions. देखो ये है आपका सेक्शन ए. C'est clair, mademoiselle? Sur la quantité et la durée du traitement. Et la durée du traitement. C'est clair? Now, share the role. Now, par exemple, votre examinateur, l'examinateur, ouais, l'examinateur joue le rôle du pharmacien. Du आपका जो क्या कहते हैं, जो एग्जामिनेटर है वो फार्मेसी का रोल प्ले करेगा. क्लियर? इसमें क्या है कि इसको पढ़ो एक बार गुरप्रीत पूरा. रीड ऑन प्लीज. Vous voulez des vitamins pour ne pas tomber malade c'est ivre. Vous demandez conseil au pharmacien. Vous lui expliquez pourquoi vous voulez des vitamins et vous lui posez les questions sur la quantité et la durée de traitement. Votre examinateur, l'examinateur. L'examinateur joue le rôle du pharmacien. C'est clair. अब अगर फार्मेसी है एग्जामिनेटर तो you have to who the way pose the question, you have to raise the question. C'est clair. Now आप क्या बोलोगे सबसे पहले? You can. I am just creating a story. I am just creating the information like comment on peut demander. Right? I will say bonjour madame. Bonjour madame. J'ai besoin d'aide. Bonjour madame. I need your help. J'ai besoin. Besoin we have need. I see this is a phrase. In case of besoin, we have to use our conjugation. J'ai besoin. I need that. J'ai besoin. C'est clair. J'ai besoin quelque chose. I need something. You know, I need something. So j'ai besoin quelque chose. J'ai besoin d'aide. C'est clair. J'ai besoin d'aide. I need your help. Okay. J'ai besoin d'aide. I need help. Pouvez-vous m'aider? Because c'est la question. Pouvez-vous m'aider? Can you? Yes. Can you help me?
Why? So maybe your professor can say bien sûr. Your professor can say bien sûr. C'est clair. Why? And she can say like this, bien sûr. C'est clair. Now you will say, अब you are raising a, you need some information. आप बोलोगे je veux des vitamines, je veux des vitamines pour ne pas tomber malade. Pour, ouais, ne pas tomber malade. C'est clair. C'est clair. OK. Et, et, je vous demande, je vous demande, OK. I request you, je vous demande d'aider, de m'aider. Je vous demande de m'aider. I request you to help me. Je vous demande de m'aider. C'est clair, mademoiselle? Why? Yeah. C'est clair? Okay, then you can say, ça fait combien? How much is that? Ça fait combien? Because you are raising a price also, because this is you are asking the question. Ça fait combien? Like how much is that? The price is that. C'est clair. Then you can say, je voudrais aussi. C'est clair. You are raising a question. Like इसका price क्या है? Je voudrais aussi acheter. Je voudrais aussi acheter un sirop contre le tout. Simple. Je voudrais, I would like to buy a I would like to. C'est clair. Is it clear to you? फिर आप पूछोगे, again you raising a question. Over here you are raising the question. Combien de fois? आप एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हो. Combien de fois devrais-je? Because you are raising a question. Je devrais-je prendre ce sirop? You are raising a question, mademoiselle. You are creating a story. Prendre ce sirop. ये क्वेश्चन आपको अपने आप से क्रिएट करने हैं. And how combien de fois? How many times should I take? Je devrais. Should I take this syrup? C'est clair, mademoiselle. Why? Combien de fois devrais-je prendre ce sirop? Yeah, c'est clair, mademoiselle. Tell me. Yes. ठीक है. फिर आप बोलोगे कि इस ट्रीटमेंट को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप पूछोगे ना कि इसको कितना टाइम लगेगा ट्रीटमेंट को. Quelle est la durée? Quelle est la durée du traitement? Mademoiselle, this is your section A wherein vous devez obtenir des informations. C'est clair. Why? Then you will say again. मैं रब कर दूं पूरा ये. कर दो. Then we have. Then you will say okay. Ça fait combien en total? Total कितना हो गया? Ça fait combien? बोलो ça fait combien? Ça fait combien? Very beautiful phrase. Ça fait combien? टोटल हम बोलते हैं ना कि टोटल कितने पैसे हो गए. Ça fait combien au total? Oh, c'est clair. Ouais. Ça fait combien au total? C'est clair. Okay. Au total. Okay. Then you will say okay. Ça fait combien au total? ठीक है. And then you can say okay. Maybe she can say 20 euro anything. Okay. Then you say prenez 20 euros. Prenez 20 euros. C'est clair. S'il vous plaît. S'il vous 20. S'il vous plaît. Please. Okay. Merci mille fois. Thank you lot of time. Merci mille fois. C'est clair. Pour m'aider. For help. कुछ ऐसे आपको एंडिंग करनी है. C'est clair, mademoiselle. Why? Yes. Okay. Prenez 20 euros, s'il vous plaît. Merci mille fois pour m'aider. C'est clair. Okay. Yes. So this is basically your section A. Very simple. Like comment on peut poser la question. C'est clair, mademoiselle. C'est clair. Yes. समझ आ रहा है आपको? Now, yes. mademoiselle, what I'm going to do is now,
देखो आज का मैं आपसे रिकॉर्डिंग शेयर करने वाला हूँ। आपको मैंने जो लिसनिंग करवाई है, राइट, आपको Yes. जो मैंने डायलॉग, राइट, आपको जो मैंने बताया कि टेल मी कि व्हाट इज योर प्रोफाइल, जो मैंने वो बताया आपको, Yes. entire Yes. you have to speak and you submit your some वो the Sumet what's oral वो the Sumet Okay. on register what's recording। You have to submit all your voice Yes, recordings. ये वाला रिकॉर्डिंग अभी आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ इसका। मैंने, ठीक है, आपसे जो पहले हमने रोल प्ले किया है वहां वाला, उसका Yes. रिकॉर्डिंग आपको सबमिट कर रहा हूँ। हर एक का आप मुझे भेजोगे, और आप मैंने जो आज जो नई जो मेरे अदर सेशन जो मैंने आपको भेजे उसका भी रिकॉर्डिंग सबमिट करोगे। इट विल हेल्प अस टू क्रॉस द बैरियर ऑफ Save टीए। time. क्लियर? Yes. आज की डेट में आई विल शेयर एटलीस्ट 4 रिकॉर्डिंग विद यू। 2 सेशन आपके वाले और 2 सेशन में आपको लेटर राइटिंग डालूंगा आगे, वो देख के Okay. आपको पूरा प्रैक्टिस करना है एंड सबमिट योर प्रोजेक्ट फटाफट फटाफट। से क्लियर? व्हाई? Okay. Yeah. से क्लियर रमेश? व्हाई? Yes, yes, yes. सो आप इसको करो फिर। Yes. मैं आपको अभी कितना शेयर कर रहा हूँ, और जितना भी शेयर कर Okay. रहा हूँ पेंडिंग मत छोड़ना। चाहे मैं आपको दिन की 4 वीडियो शेयर कर रहा हूँ, चारों को बना के भेजो मुझे, चाहे वो आपके सेशन की हो ना हो, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू कवर अप द सिलेबस एंड यू कैन रीच ऑन टीईएफ एज सून एज पॉसिबल। से क्लियर? Okay. Yes. ठीक है, सो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, व्हाई Yes. ऑफ वार आ गया Merci à de moi. आ गया।